हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अब नेक्स्ट कपल ऑफ टॉपिक्स में हम बात करेंगे लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, व्हाट आर द पॉपुलर लॉगिंग लाइब्रेरी एंड हाउ यू कैन यूज इंटरनल कॉन्फ़िग मॉड्यूल और यू कैन राइट योर ओन कस्टम कॉन्फ़िग मॉड्यूल. How can you use internal logging library which nestjs provide, or how can you write your own custom logger. API documentation हमने Swagger से किया ही है. Monitoring is the further topic, but these are like core topics. When you build an APIs, you need to worry about logging, configuration management, how you populate variables in the environment, monitoring वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे I have created a folder 3.1. यहाँ पे हम बात करेंगे config management. तो कॉन्फ़िग मॉड्यूल आप दो तरीके से यूज कर सकते हो. वन वे इज सिंपली क्रिएट अ कॉन्फ़िग मॉड्यूल और इस कॉन्फ़िग मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर दो ऐप मॉड्यूल के अंदर, ऐप कॉन्फ़िग मॉड्यूल. बिकॉज ऐप कॉन्फ़िग मॉड्यूल इज नथिंग बट इट्स ऑलरेडी यूजिंग द कॉन्फ़िग मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय nestjs कॉन्फ़िग मॉड्यूल डॉट फोर रूट. और इसके अंदर आई एम नॉट डूइंग मच, राइट. इट्स बेटर नॉट टू यूज द प्री बिल्ट. यहाँ पे आई कैन सिंपली डू इज दिस. So what I'm trying to do, I'm trying to use the existing config module provided by nestjs. ठीक है, तो inside app service I can use the config service. ठीक है, this is all pre-built. I'm not doing anything custom here. Let's say you can remove this config module also, which we don't need. You just need to do config module.for root. It is going to pick the environment variables from env.local, and in your service controller or anywhere wherever you are writing injectable service, you can inject the config service and you can access the environment variable which are defined inside a env.local. जैसे swagger username, swagger password है. How can I do this? This.config.get swagger username, swagger password. Using this you can access the environment variable. अब क्या होता है, हमारा अप्रोच है कि I want to create separate config module. That also you can do. Nobody is stopping you. But internally, either you use a .env और यू यूज़ द कॉन्फ़िग मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि आई विल क्रिएट माय ओन कॉन्फ़िग मॉड्यूल. तो आई विल क्रिएट अ कॉन्फ़िग फोल्डर and I will create my own config service. I mean, it will be obviously using config module provided by nestjs only. You are just going to write a wrapper. ठीक है, तो I will just put a config module here, same which we have deleted earlier. ये config module है और यहाँ पे I will create a simple config service and I will create config.service.ts. बट एक चीज़ मैटर करती है यहाँ पे, यू शुड क्रिएट अ डिफरेंट नेम. ऐप कॉन्फिग सर्विस, यहाँ पे आप यूज़ करो ऐप कॉन्फिग मॉड्यूल, बिकॉज कॉन्फिग मॉड्यूल कॉन्फिग सर्विस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कोर नोड nestjs. कॉन्फिग सर्विस में यहाँ पे वी आर ऑलरेडी यूजिंग द nestjs इनबिल्ट कॉन्फिग सर्विस. तो ये क्या है, एक्चुअली हम रैपर बना रहे हैं. जो कॉन्फिग सर्विस है तो हमने ऐप कॉन्फिग सर्विस बना दिया. कॉन्फिग मॉड्यूल है, उसके ऊपर रैपर बना दिया ऐप कॉन्फिग मॉड्यूल. नथिंग रॉकेट साइंस हियर. तो अब मुझे जैसे मान लो कुछ भी सिंपल वेरिएबल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, राइट. तो आई कैन जस्ट क्रिएट एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड ऑल दीज थिंग्स हियर इनसाइड दिस क्लास. स्टैटिक फंक्शन बनाओ, पब्लिक गेट नोड env, गेट सेटर फंक्शंस बना सकते हो आप. यहाँ पे पोर्ट process.env इक्वल टू पोर्ट. बाय डिफॉल्ट इट विल बी यूजिंग नंबर ऑफ 3000. ठीक है, ऐप कॉन्फिग सर्विस, ऐप कॉन्फिग मॉड्यूल. अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिग मॉड्यूल को इंजेक्ट कर दो इसके अंदर, सर्विस के अंदर, मॉड्यूल के अंदर ऐप कॉन्फिग मॉड्यूल वी विल इंजेक्ट. फटाफट ऐप कॉन्फिग मॉड्यूल. ठीक है, नाउ वंस द ऐप कॉन्फिग मॉड्यूल इज इंजेक्टेड, इस सर्विस के अंदर जाएंगे हम, ऐप कॉन्फिग सर्विस भी इंजेक्ट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ कॉन्फिग सर्विस वी विल बी इंजेक्टिंग ऐप कॉन्फिग सर्विस. अब इनडायरेक्टली दिस ऐप कॉन्फिग सर्विस इज यूजिंग द कॉन्फिग सर्विस ओनली ऑफ nestjs. अब यहाँ पे डॉट आप नोड env कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस नोड env.
अब यहाँ पे आप ग्रुपिंग बना सकते हो कि फ्रंट एंड यूआरएल, यहाँ पे आप कर सकते हो डेटाबेस, और यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न लेट्स से डेटाबेस URL. This is a key and this is an environment variable, process.env database URL. ओके, सिंपल कॉन्फिग सर्विस बना दिया हमने, ऐप कॉन्फिग सर्विस रैपर ऑन टॉप ऑफ कॉन्फिग सर्विस। अब यहाँ पे कॉन्फिग सर्विस का क्या रोल है, मतलब फॉल बैक कर सकते हो आप कॉन्फिग सर्विस पे, इफ दिस इज दैट अदरवाइज दिस डॉट config dot get and the key word is database underscore URL. ठीक है, so you have written app config service using config service. अब you already you can get on port or fall back to the port 3000 and same you are using in your app service. अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, node env this dot configs dot database URL. ठीक है, so this is how you can write custom config service. अब इसमें अंदर कुछ rocket science नहीं है, I just created a wrapper on top of that app config module config service, injected that inside here app config module, and inside service I started using app config service, and this is how you can access the variables. Just a custom wrapper for your comfort कि आप grouping करना चाहते हो, this dot config dot database all the database related thing, this dot config dot kafka, तो ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो एनवायरमेंट वेरिएबल्स की। सो दिस इज कॉल्ड कस्टम कॉन्फिग मॉड्यूल रैपर ऑन टॉप ऑफ nestjs config.